So, good morning, good afternoon, good evening, and not good night to everyone. So, today we are starting with the Right of Persons with Disabilities Act 2016. Now, this is another act which is very important and relevant for your UP Judiciary exam, as we have added number of acts in the UP Judiciary this time. So, this is one amongst those acts, which is the Right of Persons with Disabilities Act 2016. किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए हमें एक रिदम की जरूरत होती है और इस एक्ट के लिए रिदम है इमोशंस. अगर आपको इस एक्ट को समझना है, इस एक्ट को इन डेप्थ समझना है कि इस एक्ट में प्रोविजंस किस लिए दिए गए हैं, क्या उसका बेसिस है, तो यहां बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा आपके इमोशंस होंगे, जिन इमोशंस के साथ आप उन प्रोविजंस को पढ़ेंगे जो डिसेबल्ड पर्संस के लिए दिए गए हैं. So starting with the Right of Persons with Disabilities Act and the important areas which we should focus on for the UP Judiciary exam, first of all I would say that this is not a race of 10 days or 20 days that we have been gifted with this act. इस एक्ट की कहानी, इस एक्ट का जो दौर है वो इतना भी छोटा नहीं है. If I start it with that from where the marathon of this act started, I would say that it started in the 1980s. This marathon started in 1980s, and the period of 1982 to 1992 is considered as the decade of disabled persons by United Nations. The decade of disabled persons by United Nations. इस दौर को, इन 10 सालों को, इस डेकेड को हम डेकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्संस कहते हैं, जिसे यूएन ने नाम दिया है. The Rehabilitation Council of India was established. Rehabilitation Council of India was established in the year 1986. The Rehabilitation Council of India was established in 1986, looking after the people with disability, that with which all disability they are suffering from, there should be a rehabilitation council which should work at a national level to help them. So in 1986, this council was established in the year 1986. जैसा मैंने कहा, ये दौर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 82 से 92 तक का जो ये सफर था, इसे यूनाइटेड नेशंस ने डेकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्संस का नाम दिया. 1986 के बाद हमने एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की जिसका नाम था नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी. नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी. National Policy on Disability in the year 2009 हमने ये पॉलिसी फॉर्मुलेट की. इन द ईयर 2009. इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का रीजन, क्योंकि मैंने कहा वो जो दौर था वो तो यूनाइटेड नेशंस ने नाम दिया डिसेबल्ड पर्संस का, लेकिन फिर ये पॉलिसी क्यों? तो इस पॉलिसी का एक कारण है. इस पॉलिसी का कारण ये है that in the year 2006, there was a UN convention on the rights of persons with disabilities. In 2006, there was a convention which was held by the UN for the rights of person with disabilities. और ये जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी that in 2007, India became the first country to ratify the same. India became the first country to ratify the same. India became the first country to ratify the same. It means India was the first signatory to this convention.
India was the first signatory to this convention. And therefore, in 2009, we formulated a national policy on disability. We formulated a national policy on disability and henceforth came up with this act in 2016, which we are going to study. Finally, in 2016, we were gifted with this act, the rights of persons with disabilities, that is in the year 2016. The date was 1st October 2007 when the India ratified this convention. 1st October 2007. 1st October 2007. Just a day before the Gandhi Jayanti, that is 2nd of October, 1st October को इंडिया ने इस कन्वेंशन को ratify किया and became the first signatory to this convention. Now the date of enforcement is very important for this act and for every other act. So the date of enforcement is 19/4/2017. 19/4/2017, that is 19th of April 2017. Now, starting with the act, there are few and certain provisions which are important for the UP judiciary exam, which are relevant for you to understand that how you have to connect them in order to understand the making of this act. So first of all, you need to understand few terms which are related to this act, and the first and foremost is 2S. 2S. Now this is the preliminary special class, so we cannot read the whole act. This is the preliminary special class, so we cannot read the whole act, but yes, we will not left or do something which is not relevant for the exam. So 2S. Person with disability. Person with disability. Person with disability. Now, person with disability, जिसे सहारा चाहिए क्योंकि वो डिसेबल्ड है, तो इसलिए उसे 2S में लिखा गया. 2S, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसे सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट हम नहीं, सबसे पहले देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर देती है स्टेट गवर्नमेंट, और फिर देती है वो कमीशंस जिसको स्टेट और सेंटर ने बनाया. तो 2S में जिन्हें सपोर्ट चाहिए वो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. अब वो डिसेबिलिटी कैसी हो सकती है? हाउ दैट डिसेबिलिटी कैन बी? दैट डिसेबिलिटी कैन बी फिजिकल. That disability can be physical, mental, intellectual. That disability can be physical, mental, intellectual, sensory impairment, sensory impairment, sensory impairment, which in the interaction with the barriers hinders the full and effective participation in society. That is, something which hinders full and effective participation. ऐसी कोई चीज जो आपको रोकती है for the full and effective participation in society. Any hinder, any barrier, any barrier.
which stops you from your complete and effective participation in the societal norms, in the societal activities. That can be communicational, that can be cultural, that can be economic, that can be environmental, that can be political, social, any barrier which stops you from the full participation in the society. So person with disability means any disability. और ये जानकर आपको ताजुब होगा that this 2016 Act talks about 21 kinds of disabilities. 21 kinds of disabilities in total. 21 kinds of disabilities in total. 2017 का एक्ट 21 disabilities. Any kind of disability with which the state government is taking note of or giving you the mention that yes, this disability can be taken care of. Now there is a difference between person with disability and person with benchmark disability. Person with benchmark disability, that is 2R. Person with benchmark disability. Benchmark. Benchmark. Benchmark disability. It means something which cannot be defined in measurable terms. Something which cannot be defined in measurable terms. That is not less than 40% of specified disability. Not less than 40% of specified disability. Not less than 40% of specified disability. 40%. So this is the another important key area, that how much percentage of specified disability, that is 40%. Any of your organ, any of your sense which is not working properly, and it should be measurable in terms of 40% of specified disability. If this specified disability is not measured, then 40%. If it is measured, if it is measurable, then that would be a measured sum with the medical opinion. If it is measurable, then it has to be specified by the certified authority. If it is measurable, it has to be certified by the concerned certified authority. Kitna? 60%, 70%, 80%. How much? And what inability it is producing in your body? What disability it is producing in your body? With what functions you have been stopped, and what exactly it is creating a barrier inside you which is stopping you from your effective participation. So how much of percentage is there in your body, in any organ, in any senses, mental, physical, any type? Clear? So 2R and 2S are the two important terms. 2S where the support is required, the person with disability. And just before it, the benchmark disability. 2R, benchmark. हम कहते हैं कि हम साथ हैं, हम सब साथ हैं, सबका साथ सबका विकास. हम इस थीम पर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास. आप सब जानते होंगे कि मैं किस थीम की बात कर रही हूं, कि हम साथ हैं. लेकिन हम साथ हैं में 2H में ये डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हैं, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हो रहा. 2H में ये डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हैं, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हो रहा.
जबकि मना कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। देयर शैल नॉट बी एनी एक्सटिंक्शन, एक्सक्लूजन, नलिफाइंग द रिकॉग्निशन, नहीं करना, लेकिन फिर भी होता है। So there is complete denial on any form of discrimination. Complete denial for any form of discrimination. Complete denial. The irony is कि हम आपके साथ हैं लेकिन H में ही डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना किया जा रहा है, मना कर रहे हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन, no extinction. Yes, but special provisions can be made for. Special provisions can be made for such persons who are suffering from any kind of disability. Who are suffering from any kind of disability. Even there was a very famous case law in the Contract Act itself, Paniram versus Union of India. You just hear me carefully. In Paniram versus Union of India, one person was gone to the vacation. He went for a vacation. I just remembered this case law. It switched in my mind. The person went for a vacation to his house and he was an army personnel. He was coming back, so he met with an accident where he got succumbed to 80% of the disability, the injury. So basically he was under the employment, but he was on vacation. So what you will consider, that in the vacation, would you not consider the impairment of the person who is working for you day and night on the borders? So the scheme was applicable on him, the scheme was applied on him, and in the second case, in the second stage of that case, they were given the complete denial that you cannot get protection under this act. You cannot get protection under this scheme which we have under the centrally sponsored scheme. The reason being that we only give scheme to the persons who have entered into this border force after this particular year, that is 1975. So we cannot give it a retrospective effect. So basically the case was on the standardized form of contract where the other party is at the least negotiable stage to negotiate the terms. But if I am getting to the facts of the case were such that the person succumbed 80% of the disability. Now if he is in the employed part, if he is employed in any industry, any establishment and in the forces, who is working day and night, so that person should be given the advantage of the scheme irrespective of when he joined the scheme. Because the scheme, the act has come with the intention, and that complete intention is that you have to secure and give support to the persons who are under the disability. Now, what percentage of disability? If it is measurable, then the certified authority will tell. If not, then it should not be less than 40% of the specified disability. So, but they should be given advantage of in this case. Because if you will look to the recent cases of the Supreme Court or even the High Courts, you will find out that one by one, the Supreme Court has unfolded the sheets of the Act. They have unfolded the sheets of Act because this Act is new Act. And it will take even more 10 years to come with the complete and expansive interpretation of the Act, that what we can include and what we cannot, because this is the very new beginning of the Act. So even the Supreme Court is unfolding the sheets one by one. Okay, we can include this. We can include this. On the basis of equity, we can include this. So what should be in operation? What should be in operation when not? So that has to be decided by the court even in more upcoming years, because the very newly act, hardly 4-5 years have passed, सिर्फ 4 से 5 साल हुए हैं, तो हम इस एक्ट की कंप्लीट इंटरप्रिटेशन तो अभी भी नहीं जान सकते कि हो सकता है आने वाले समय में वो इस परसेंटेज को भी हटा दें या इस परसेंटेज को भी इमटेरियल बना दें। 5 साल के अंदर हम किसी एक्ट का इंटेंशन इन डेप्थ नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ही समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कमिंग वन आफ्टर वन डिसीजन विथ न्यूली इंटरप्रिटेशंस, that in this case we can give, in this case we cannot give, okay in this case we can give a harmonious construction। तो इस तरह से अलग अलग केसेस में कोर्ट ने अलग अलग डायमेंशन दे दिया। तो ये चीज अभी भी और इंटरप्रिटेशन का वेट कर रही है, जहां पर हम इसको और एक्सपेंसिव मीनिंग से समझ पाएंगे। ऑल राइट,
So for the definition purpose, it is important to S, support, that is person with disabilities, to R, benchmark disability, and हम साथ साथ हैं का जो discrimination है वो नहीं होना चाहिए, that is to H, discrimination, not H, H. Now, the primary objectives. If I talk about the primary objectives, we will cover all the respective sections under this objective. The primary objectives. The first and the foremost says that every person with disability has the right to equality. That every person with disabled position has right to equality. Right to equality. It means the person should be given equal opportunity in terms of employment. There should be not discrimination. There should not be any kind of discrimination in any public place or the place of work or any such place where such practice can take place. Anywhere. That is the complete aberration of this act. Now, in section 7 of this act, talks about the protection from abuse, violence and exploitation. That there shall not be any abuse, violence or exploitation against such person, keeping in mind that the person has to be treated equally. The person has to be treated equally, and the appropriate government will take the measures. Appropriate government, it can be center, it can be state. Appropriate government will take the measures. And if any person feels that something has happened, if any person is aggrieved, that is, if the disabled person is aggrieved, he may give this information to the executive magistrate. He will give this information to executive magistrate. Now, in this cognizance of complaint or application, the executive magistrate can take help of police, can take the assistance of police, and when the assistance of police will be taken, then the police will aware that person of all his rights, including Article 39A, that is free legal aid. And if the executive magistrate feels that the information which is given to me is somewhere not the exact exploitation, or it is not a social behavior or conduct which I can take control of, but rather it is an offense. It is an offense which is done with the disabled person, then that executive magistrate will forward that complaint to the JM first class or MM, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है ये तो एक ऑफेंस स्थापित कर रही है, तो उस बात की पुष्टिकरण करते हुए
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट, उस इंफॉर्मेशन की कॉपी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को फॉरवर्ड कर देगी ताकि वो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकें। इस दौरान अगर आपको किसी चीज का सपोर्ट चाहिए, that the person who feels that yes I have the right to equality और मेरे साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, और जैसा कि सेक्शन 7 भी कह रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो इस बीच में आप अगर हेल्प चाहते हैं, किसी भी प्रकार का असिस्टेंस चाहते हैं, देन इन दिस मीन टाइम यू कैन गो टू सेक्शन 38, section 38 of your act, section 38, section 38 which says special provisions for persons with disabilities, special provisions for persons with disabilities with high support, the high support. It shall be given to the concerned authority. You will apply to the concerned authority, whichever has the jurisdiction. It may be state, it may be center, it may be any assessment board. It may be state, it may be center, it may be any assessment board which is created for the same. And then they will help that person, whoever is in high demand of help or need or assistance. Then in section 38 you ask for the high support. Now if I come to the second right, that is right to equality, then after that second right is right to education. Right to education. Right to education. Chapter 3 of the Act deals with the same right of education. Section 16, that all the educational institutions funded by government, all educational institutions funded by government to provide the education to disabled children, to provide the education to disabled children, to provide education to disabled children. Then just after section 16, section 17 says that the education should be inclusive of promoting the provisions of this act. It means how you are promoting the provisions of this act. So section 17 says that the persons with benchmark disability, they are entitled to free learning material till the age of 18 years. Free learning material till the age of 18 years. क्या क्या स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट?
16 में कहा एजुकेशन दीजिए उनको, प्रावधान रखिए कि आप उनके लिए क्या सेटअप रखते हैं. You need to create a proper setup to educate the disabled children. Then the very next section, section 17, is saying that how your education should be inclusive of promoting the provisions of this act. So here they are saying that you will provide free material to the person with benchmark disability till they attain the age of 18 years. And then section 38, 32. Section 32. Section 32. Section 32, it says 5% reservation, 5% reservation in all higher government institutions, in all higher government institutions, in all higher government institutions for the disabled children. 5% reservation in all government higher एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. 5% रिजर्वेशन आप रखेंगे, सीट्स रखेंगे ही रखेंगे. 32. देखिए सेक्शन 16 से हमारे एजुकेशन की बात शुरू होती है. सेक्शन 16, सो 16 इंटू 2 32, जहां पे 5% रिजर्वेशन की बात की गई है. क्योंकि 17 तो जस्ट अगला सेक्शन है तो वैसे ही याद हो गया 16 एंड 17, लेकिन 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 एंड वी आर गेटिंग 5% रिजर्वेशन, दैट इज 32, 3 + 2 5% रिजर्वेशन. 5% रिजर्वेशन. अब प्राइवेट तो देगी नहीं, या प्राइवेट तो नहीं दे रही है, या उनके लिए अलग रूल्स होंगे. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट higher institutions that they will do or they will give 5% reservation. Clear? Now the next right, third right. Right to develop, right to develop skills and employment. Right to develop skills and employment. Right to develop skills and employment. So coming in this row, section 20. Section 20 prohibits. Section 20 prohibits discrimination in employment. Discrimination in employment. Section 20 prohibits discrimination in employment. सिर्फ इस बेसिस पर किसी का प्रमोशन रोक देना कि वो पर्सन डिसेबल्ड है, ये ठीक नहीं है. If the cognitive faculty of the person, that is the compos mentis, that is the mental capacity of the person, is working properly 100%, and that person is not incapable or disabled from the mind, then why you are preventing him from getting promotion only on the basis that you have to put extra effort for his convenience. थोड़ा ज्यादा हेल्प करनी पड़ेगी ना आपको उस पर्सन को. You have to create a special doorway maybe if he is not able to walk properly. थोड़ा स्पेस ज्यादा देना होगा, सिर्फ इसलिए आप उनकी प्रमोशन रोकेंगे. So that would not be fair and just. So section 20 clearly says that we are prohibiting discrimination in employment only on the ground that a person is disabled. No, it should not be practiced. Then just after 20, section 21. Section 21, which mandates every establishment. Section 21 mandates every establishment for equal opportunity policy. Equal opportunity policy.
equal opportunity policy. It means any policy, any establishment will create or form that should be equal opportunity policy. It means it should be open for all. Open for all. It should be open for all. Then 23. There has to be grievance redressal officer. Grievance redressal officer. If there is any discrimination done in the area of employment, in the field of employment, then there has to be grievance redressal officer. Grievance redressal officer, to whom you can inform about the same if there is any discrimination in employment. If there is any discrimination in employment. And that grievance redressal officer will forward this complaint or information to the chief commissioner or to the state commissioner. Chief commissioner or to the state commissioner within 2 weeks. Within 2 weeks. State commissioner or chief commissioner within 2 weeks. For the appointment of commissioners, that is chief commissioner, state commissioner, we read chapter 12. We read chapter 12. Chief commissioner, state commissioner, chapter 12. So, right to develop skills and employment 20, 21, 23. No discrimination. और आप आर्टिकल 23 और 24 की भी बात करोगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक्सप्लॉयटेशन का राइट 23 एंड 24 में ही दिया है. यहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन की बात 23 में ही की जा रही है. Then the next right, equal recognition before law and guardianship. Equal recognition before law and guardianship. Equal recognition before law and guardianship. Equal recognition. It means you can manage your affairs on your own. You have the right to be recognized by the law. देखिए कितना अच्छा राइट है. You have the right to be recognized by the law. आपके पास ये अधिकार है कि लॉ आपके अधिकार को रिकॉग्नाइज करे. You have the right to be recognized by the law. Section 3. Right to be recognized by law. That is equal recognition by law. Equal recognition. Right to be recognized by law. Then, Section 14. Now, there can be a situation or there can be any such situation where that disabled person might feel that he or she needs a support. He or she needs a person who can help them in taking legal decisions. In taking legal decisions, legally binding decisions.
A decisions which involves and includes some legal and technicalities, the legal technicalities. ऐसा हो सकता है कि जहां उस पर्सन को लगे that I need some assistance, I need some person with me, so that person is known as limited guardian. Limited guardian under section 14, there is a concept called limited guardian. And such a guardian can be appointed by the district court. Such a guardian can be appointed by the district court or the state government. Or the state government. Who can help him? Who can help him? Who can help him in legal decisions? Who can help him in legal decisions? So 3 is saying, मुझे recognize कर लो. I'm not the third person. I should be recognized like every person. So 3 is saying, don't consider me a third person. Treat me as equal person. Recognized by law, equal recognition. And then section 14 is giving you the right of limited guardian. Limited guardian who will be or who shall be appointed by the district court, or in the case if not the district court, then the state government, who can help that person, that disabled person, in taking the legal technical decisions, in taking the legal technical decisions. Now, fifth right, right of reservation. Right of reservation. Right of reservation. Right of reservation. So the right of reservation starts with section 31. Section 31, chapter 6. Right of reservation, chapter 6, section 31. Right to free education. Right to free education. For a person with benchmark disability. Benchmark disability. Benchmark disability. Until he attains the age of 18 years. Until he attains the age of 18 years. Until he attains the age of 18 years, in any neighborhood school. In any neighborhood school. In any neighborhood school. Then again, section 32 will be repeated here. 5% reservation. 5% reservation in higher government institutions. In higher government institutions. 5% reservation in higher government institutions. Section 33. Section 33. Reservation of post in employment. Reservation of post in employment. Reservation of post in employment. Now, how will you identify and determine that which post is suitable for what kind of person? Now, the person with disability has to be viewed like this, that what exactly work can be done by this person. Because maybe it is possible that he cannot do all the work alone. And he should be given such work which he can do on his own without any much support. Or without any 100% support. The support is also of different kind. All time support, one time support,
what kind of support the person requires. So what exactly work he can do when he is employed in our establishment. So for that what post has to be reserved for the person concerned in the employment, an expert committee is formed. An expert committee is formed. An expert committee is formed who views that what post can be reserved for such persons. That if a person is suffering from any benchmark disability, if he is suffering from any kind of benchmark disability, then what post he can hold. And this expert committee reviews this reservation of post in every 3 years. In every 3 years, they review this post. If generally I talk about, then generally it is minimum of 4%. Minimum of 4% vacancies are reserved for person with benchmark disabilities. 4%. But the expert committee shall review this reservation of post in every 3 years. Do we have to amend it? Do we have to review it? Do we have to establish a certain criteria? कुछ अलग करना है? So in every 3 years they will keep on reviewing कि जो हमने आज से 3 साल पहले रखा था, क्या उसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता है? तो वो हर 3 साल में इस बात को देखेंगे. Then the next right comes social security. Social security and healthcare. Social security and healthcare. Social security and healthcare. Now section 24. Section 24 imposes this obligation on appropriate government. Imposes this obligation on appropriate government. That they should be getting the social security, or the schemes should be such which can raise their standard of living, or you can say independent living. So social security. Then in 25, section 25, free healthcare by appropriate government. Free healthcare by appropriate government. Free healthcare by appropriate government. Free healthcare by the appropriate government. The free access to the health, the treatments which they are going through or which they suffers through. Section 24 and 25. Social security and healthcare. Those sections. Then, like we have 6 fundamental rights, so these are also 6 rights. थोड़ा सा देख लें अगर पीछे चल के आगे बढ़ने से पहले, तो पहला राइट था राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी की मैंने बात की, तो राइट टू इक्वालिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है आर्टिकल 14 में, उसके जस्ट हाफ में दिया है यहां पर सेक्शन 7. तो सेक्शन 7 कहता है कि आपको डिसेबल्ड पर्सन को हर एब्यूज, हर एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है,
और इस बात को निर्धारित कौन करेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेकिन अगर कोई भी पर्सन फिर भी पीड़ित है तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह बात बता सकता है कि उसके साथ इस किसी भी प्रकार का अब्यूज, वायलेंस या एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस बात की गह तक जाने के बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई ऑफेंस मेड आउट हुआ है या उसमें पुलिस की आवश्यकता पड़ सकती है तो वो पुलिस की हेल्प लेते हुए पुलिस को कह सकती है कि आप अब इस केस को देखिए या आप इस इंफॉर्मेशन पर वर्क करिए। और पुलिस जब इस केस को अपने पास लेगी तो वो इस बात को इंश्योर करेगी कि पुलिस उस पर्सन को उसके राइट से अवेयर करे कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, एंड ऑल्सो पर्टिकुलरली आर्टिकल 39A दैट इज फ्री लीगल एड। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किसी भी समय ऐसा लगता है कि जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है इस इंफॉर्मेशन से तो ऐसा लगता है कि कोई ऑफेंस हुआ है, तो इस ऑफेंस की सूचना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खुद जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को दे देंगे। पहला, राइट टू इक्वालिटी, सेक्शन 7। उसके बाद मैंने कहा कि सेक्शन 38 इसी एक्ट का ये कहता है दैट स्पेशल प्रोविजंस, जैसा कि मैंने कहा कि सेक्शन 7 में अगर कोई भी अब्यूज, वायलेंस या किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता है उस समय आपको किसी भी हायर सपोर्ट की जरूरत है तो आप स्टेट, सेंटर या असेसमेंट बोर्ड से सेक्शन 38 में उसी समय वो हेल्प ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा राइट आता है राइट टू एजुकेशन, जो कि है चैप्टर 3 में, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन सेक्शन 16 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 16 कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि गवर्नमेंट फंडेड हैं वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के एजुकेशन का ध्यान रखेंगे, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और एक परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन अपने स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस में रखेंगे। सेक्शन 16 से जस्ट अगला सेक्शन 17 ये कहता है कि जब आप प्रमोशन, जब आप एजुकेशन फॉर्म कर रहे हैं या जब भी कोई एजुकेशन मॉड्यूल बना रहे हैं तो उसमें इन प्रोविजंस की झलक आनी चाहिए। इट मींस दे शुड बी इंक्लूसिव ऑफ प्रमोटिंग दीज प्रोविजंस। तो यही प्रमोशन की झलक देखने के लिए हम सेक्शन 32 में चले जाते हैं। 16 इंटू 2 32, और सेक्शन 32 कहता है 5% रिजर्वेशन की। 3 + 2 5, 5% रिजर्वेशन कहता है दैट इन ऑल गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 5% रिजर्वेशन रहेगी फॉर द पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। 16, 17 एंड 16 का डबल 32, जिसमें की है 5% रिजर्वेशन। अगले स्टेप पे चलते हैं, राइट टू डेवलप स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसकी जब हम बात करते हैं कि आपको अपना स्किल डेवलप करना है, एम्प्लॉयमेंट में आपको अधिकार मिले, तो हम चलते हैं सेक्शन 20 से। सेक्शन 20 कहता है कि एम्प्लॉयमेंट में किसी भी प्रकार का प्रोहिबिशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। देयर इज द कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन इन द एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर चाहे वो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो। सेक्शन 21 कहता है कि हर एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी ही फ्रेम करे विच इज ओपन फॉर ऑल। सो सेक्शन 20 एंड 21 दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 23 पे, जो कि हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की बात करता है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हम आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 23 एंड 24 में भी एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसी तरह हम यहां पर भी सेक्शन 23 में उसी की बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो वो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को दे दिया जा सकता है, बता दिया जा सकता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और वही ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर आपकी उस इंफॉर्मेशन को 2 व्यक्तियों को दे सकते हैं या दोनों में से किसी एक व्यक्ति को दे सकते हैं। पहले है चीफ कमिश्नर, दूसरे है स्टेट कमिश्नर। 2 हफ्ते के अंदर अंदर, विद इन 2 वीक्स, he will give this information to the chief commissioner or the state commissioner। और स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर कैसे बनते हैं वो दिया गया है चैप्टर नंबर 12 में। अगली राइट पे चलते हैं, जो है इक्वल रिकॉग्निशन बिफोर लॉ एंड द गार्जियनशिप, जो कहता है कि डोंट कंसीडर मी थर्ड पर्सन, आई एम नॉट द थर्ड पर्सन, आई एम द सेम पर्सन लाइक योर्स। सो सेक्शन 3
कहता है कि मुझे थर्ड पर्सन मत मानो, मुझे लॉ में इक्वली रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूं, बस मुझ में एक डिसेबिलिटी है और वो डिसेबिलिटी कोई भी हो सकती है. इट कैन बी मेंटल, फिजिकल, सेंसिटोरियल, एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी. वो नर्वस भी हो सकती है. और डिसेबिलिटी की परिभाषा हम पढ़ते हैं सेक्शन 2S में, जहां पर उस पर्सन को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है. जो हम कहते हैं कि जिस पर्सन को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वही डिसेबल है. सो 2S डिसेबल्ड पर्सन. बेंचमार्क डिसेबिलिटी 2R. और हम साथ साथ हैं को डिस्क्रिमिनेशन में हम नहीं लाते, क्योंकि हम कहते हैं कि हम साथ हैं और हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते. तो 2H में आपका डिस्क्रिमिनेशन डिफाइंड है. अब जब हम इक्वल रिकॉग्निशन की बात करते हैं सेक्शन 3 में, जो कहता है कि मुझे सेम समझो, उसी के बाद हम सेक्शन 14 में कहते हैं आपको एक लिमिटेड गार्जियन दे दिया है. सेक्शन 14 में लिमिटेड गार्जियन दे दिया है. भाई आपके पास सब है लेकिन लिमिटनेस भी रहेगी. ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो जाएगा. तो सेक्शन 14 में एक लिमिटेड गार्जियन दे दिया कि भाई आपको जहां आवश्यकता हो, जहां आपको लगे कि किसी लीगल डिसीजन, किसी टेक्निकल डिसीजन में आपको किसी की सहायता की जरूरत है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको खुद एक गार्जियन दे रही है अपॉइंट करके, जिसका नाम हम कहते हैं लिमिटेड गार्जियन. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपॉइंट नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाई है, तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट भी उस लिमिटेड गार्जियन को अपॉइंट कर सकती है, जो उस व्यक्ति की सहायता करेगा. अगला राइट है राइट ऑफ रिजर्वेशन. राइट ऑफ रिजर्वेशन ये बात करता है कि कहां कहां आपको अधिकार दिया जा रहा है और उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है. तो वो स्टार्ट होता है सेक्शन 31 से. सेक्शन 31. सेक्शन 31 कहता है राइट टू फ्री एजुकेशन. फ्री एजुकेशन है आपको 18 साल तक नियर बाय आपके हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि गवर्नमेंट फंडेड है. आपको राइट टू फ्री एजुकेशन है, यानी कि आर्टिकल 21A को क्लियरली प्रमोट कर रहा है. आर्टिकल 21A को क्लियरली प्रमोट कर रहा है. अब आपसे क्वेश्चन तुरंत पूछ लें कि किस आर्टिकल को प्रमोट कर रहा है. 31, 21, 31. तो यानी कि 3121A को प्रमोट कर रहा है, जो कि बात करता है एजुकेशन की. दैट राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट. उसी को प्रमोट कर रहा है सेक्शन 31 कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फ्री एजुकेशन दी जाए. उसी का जस्ट अगला आर्टिकल 32 कहता है 3+2 5. मैंने बताया 5% रिजर्वेशन इन हायर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. देन द नेक्स्ट आर्टिकल, द नेक्स्ट सेक्शन 33 कहता है रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ पोस्ट आपके लिए रिजर्व की जाएंगी. सेक्शन 33 कहते हैं कि देखिए हमने स्कूल तक किया, अब एम्प्लॉयमेंट की बारी आती है तो एम्प्लॉयमेंट में भी करेंगे, लेकिन कौन सी पोस्ट रखनी चाहिए, कौन सी पोस्ट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी पोस्ट में आपका मैन लेबर या फिर ह्यूमन लेबर ही इन्वॉल्व हो, तो वहां हम नहीं रख पाएंगे. अगर आपको गार्ड बनाना है तो गार्ड का तो काम ये कि तुरंत भाग सके, तो क्या आप भाग सकते हैं, तो हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी. सो व्हाट एग्जैक्टली पोस्ट कैन बी रिजर्व फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, दैट हैज टू बी रिव्यूड बाय द एक्सपर्ट कमिटी, एंड एक्सपर्ट कमिटी विल रिव्यू दिस इन एवरी 3 years कि कौन सी पोस्ट हम रख सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या कुछ चेंज होना है. आफ्टर सेक्शन 33 मैंने बताया दैट मिनिमम ऑफ 4% वैकेंसीज फॉर द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैव टू बी रिजर्व्ड फॉर द पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन द all establishments and institutions. Then the last right, sixth right, that is social security and health care. Social security and health care को भी हम recognize करेंगे, उनको देंगे, जो कि है section 24 and 25. 24 कहता है कि appropriate government के ऊपर ये obligation है कि वो standard of living या independent living पर कुछ ऐसी स्कीम्स बनाएगी जो कि उन डिसेबल्ड पर्संस को सोशल सिक्योरिटी देगी. यानी कि जब भी सेंटर स्टेट कोई भी स्कीम बनाएगी तो उसमें डिसेबल्ड पर्संस को भी पूरी सोशल सिक्योरिटी देगी. देन सेक्शन 25 व्हिच टॉक्स अबाउट फ्री हेल्थ केयर बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ठीक है, यहां से हमारे राइट्स खत्म होने के बाद कुछ ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट की. ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट. ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट. चैप्टर 7 में है ड्यूटीज. चैप्टर 7 में है ड्यूटीज.
जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में हर गवर्नमेंट पे कुछ ड्यूटीज दी गई हैं कि इन इन क्षेत्रों में आप लॉ बना सकते हो, उसी प्रकार यहां भी चैप्टर 7 में गवर्नमेंट ही ड्यूटीज दी गई हैं कि आपकी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उन डिसेबल्ड पर्संस के लिए जो आपको इंश्योर करनी है। ड्यूटीज आर नॉट मेंट टू ओनली राइट इन द बुक्स बट आर ऑल्सो टू बी ऑब्लाइज्ड विथ, उनको आपको मानना भी है। सेक्शन 41 जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर करेगी कि किसी भी पब्लिक व्हीकल में, इन एनी पब्लिक व्हीकल देयर शुड बी इजी एक्सेस ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स। कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? इजी एक्सेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग, टिकटिंग, एंटरिंग, सब कुछ। उसके लिए क्या प्रावधान होगा? वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, जिसके भी अंडर वो पब्लिक व्हीकल आता होगा, बसेस, ट्रेन्स, मेट्रोज, रेलवेज। देन सेक्शन 48 कहा कि आपको स्कीम्स तो बनानी है। सेक्शन 24 में कहा ना आपको ऐसा सोशल सिक्योरिटी देनी है, लेकिन सेक्शन 24 में जहां आपको यह कहा गया कि आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो जस्ट उसके डबल सेक्शन में यह कहा कि उनका ऑडिट भी कर लेना, ऑडिट ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स। भाई 24 में कह रहे हैं आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लेकिन सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स बनाने के बाद उन पर ऑडिट कौन करेगा? उनको देखेगा कौन कि उस पर इंप्लीमेंटेशन हो भी रहा है या नहीं? तो 24 का जस्ट डबल 48 ऑडिट। देन इन दो मेन ड्यूटीज के बाद भाई रूल्स कौन बना सकता है? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो बना ही सकती है। एक बार तो आपको सेक्शंस को थोड़ा सा तो नजर से देखना होगा कि हाँ कौन रूल्स बना सकता है, कौन रूल्स नहीं बना सकता है, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जहां कुछ स्पेसिफिक कहा जा रहा है। तो स्पेसिफिक कहते हुए नाउ देयर इज रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस for disabled people, registration of institutions for disabled people. It means how you will register your institution only for the purpose of disabled people. Suppose if your institution is only working for the disabled people, or they are providing any service to the disabled people, then you need to register your institution likewise. So for that registration, we read section 50 and 52. Section 50 and 52. Competent authority will be responsible for delivering the certificates to the institutions. That which institute should get this certificate for registration, the certificate of registration.
देखिए, जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी संस्था को ये सर्टिफिकेट इशू करने वाले हैं, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि क्या उस संस्था, उस एस्टेब्लिशमेंट ने क्या वो सब स्टेप्स लिए हैं कि वो डिसेबल्ड पर्संस को सर्व कर सकती है। अगर वो सिर्फ डिसेबल्ड पर्संस को ये लिए या सिर्फ मेनली उनके लिए काम कर रही है, तो क्या दे हैव टेकन ऑल द मेजरेबल स्टेप्स विच दे आर सपोज टू टेक, क्या उन्होंने वो लिया है। तो उस सर्टिफिकेट को इशू करने से पहले द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल एंश्योर दिस कि क्या वो इंस्टीट्यूट, वो एस्टैब्लिशमेंट सब स्टेप्स को कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड देन सेक्शन 52 कहता है कि आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन आप उसको रिवोक भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि सर्टिफिकेट होल्डर ने कोई भी कंडीशन ब्रीच की है। इफ सर्टिफिकेट होल्डर हैज ब्रीच्ड एनी कंडीशन, या फिर और प्रोड्यूस्ड एनी फॉल्स मटेरियल, आपको गलत दिखाकर सर्टिफिकेट इशू करा लिया है और प्रोड्यूस्ड एनी फॉल्स मटेरियल, तो आप उसको रिवोक भी कर सकते हो। 50 में दे रहे हो, 52 में वापस रिवोक कर रहे हो, ले लिया वापस, आपने हमें झूठ बताया, यू फर्निश्ड फॉल्स पर्टिकुलर्स इन ऑर्डर टू गेट द सर्टिफिकेट इशूड। Then there will be two advisory boards. Two advisory boards. First one is central and second one is state. Central and state. सेंट्रल का गठन करती है सेक्शन 60। सेंट्रल का गठन करती है सेक्शन 60। जो कहती है दैट देयर शैल बी अ chairperson who is the minister of disability affairs. Disability affairs. It means this is an ex officio position कि जो भी व्यक्ति उस समय मिनिस्टर होगा, who is the minister in charge of disability affairs in the central government, will be the ex officio chairperson. Then the person who is minister in the disability affairs in state government, that person will be vice chairperson. वाइस चेयरपर्सन, वो वाइस चेयरपर्सन बन जाएंगे और वो भी एक्स ऑफिशियो ही होंगे, एक्स ऑफिशियो। Then 3 members of parliament. 3 members of parliament. Two from Lok Sabha plus 1 from Rajya Sabha. 3 members of parliament, 2 from Lok Sabha and 1 from Rajya Sabha. Then I am extending here secretaries. Secretaries.
secretaries who are working in the concerned departments like social justice, development, हेल्थ एंड फैमिली, जो भी इन डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज होंगे, जो भी इन डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज होंगे, वो भी इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में एक्स ऑफिशियो स्थान प्राप्त करेंगे। एक्स ऑफिशियो। देन द सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग, Secretary of Niti Ayog, again ex officio. Secretary of Niti Ayog, ex officio. Now the Rehabilitation Council of India, Rehabilitation Council of India, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बनी थी 1986 में, इन द डेकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्संस 1986, उनके चेयरपर्सन then the chairperson of National Trust, chairperson of National Trust for the welfare of persons with disability, for welfare of persons with disability. स्टेट बोर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेंट्रल बोर्ड, क्योंकि यहां हर व्यक्ति एक्स ऑफिशियो स्थान ग्रहण किया हुआ है। ये सब एक्स ऑफिशियो हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी किसी पोस्ट को सर्व कर रहे हैं, इसलिए ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। 3 members of parliament active members, not the retired ones, the active. Then the chairperson of handicapped finance development, chairperson of handicapped finance development, chairman of railway board, the chairperson of UGC, Medical Council of India, ये सभी मेंबर्स एक्स ऑफिशियो होंगे। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट इन फील्ड से रिलेटेड जो काम जहां जहां हो सकता है, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी, रेलवे है तो रेलवे बोर्ड, फिनेंस डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन काउंसिल, सभी जगह के चेयरमैन आपकी एक्स ऑफिशियो स्थान प्राप्त करेंगे इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में। क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो इसलिए कहलाएंगे क्योंकि ये पहले ही दे आर ऑलरेडी सर्विंग अ प्लेस, अ पोजीशन इन गवर्नमेंट, and because of that position, by virtue of that position, they will be taking the responsibility in the central advisory board also. लेकिन इसके चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेयरपर्सन होंगे जो भी उस मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के चेयरपर्सन होंगे, वही एक्स ऑफिशियो यहां होंगे, और जो मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट में होंगे वो वाइस चेयरपर्सन इस कमेटी में, इस एडवाइजरी बोर्ड में होंगे। सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोग, ये तो हो गए सब जगह के चेयरपर्सन, कुछ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, वो प्रिलिमिनरी पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 60 ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है
कि कुछ लोगों को नॉमिनेट करेगी। इतना स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंटर है। कुछ लोगों को नॉमिनेट करेगी, और नॉमिनेट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी। फाइव एक्सपर्टीज मेंबर्स in field of disability. 5 expertise members in field of disability. 10 persons from NGO. अब NGO कौन सी? जो इन्हीं डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए काम कर रही है। 10 persons from NGO. Now, out of these 10, 5 would be women, 5 would be women, 1 from SC and 1 from ST. Out of these 10, 5 women, 1 SC and 1 ST. Rest 3 can be any. Then 3 representatives of national level chambers of commerce and industry, national level chambers of commerce and industry. National level chambers of commerce and industry. So 5 plus 10 plus 3. 5 plus 10 plus 3. 5 expertise, 10 from the NGO and 3 the representatives from the national level chambers of commerce and industry. वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इन 10 में से आपको ध्यान रखना है कि 5 वुमेन होंगी, 1 फ्रॉम दी SC एंड 1 दी ST, जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह सेक्शन 60 में हम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड पढ़ते हैं, उसी तरह हम सेक्शन 66 में कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट बोर्ड पढ़ते हैं, जिसे आप रीड कर सकते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए दैट इन सेक्शन 66 इट इज स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। वहां सारे मिनिस्टर्स स्टेट के आ जाएंगे, सेम टू सेम। जैसे भी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पढ़ा, सारे मिनिस्टर्स स्टेट में शिफ्ट हो जाएंगे, वही एक्स ऑफिशियो बनेंगे। जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि सारे मिनिस्टर्स अब स्टेट के हो गए। So section 60 and 66 talks about the composition of boards, but section 84 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कोर्ट, सेक्शन 84 स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट वो कहता है कि स्पीडी ट्रायल के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल, द स्टेट गवर्नमेंट in concurrence with Chief Justice of High Court, the state government in concurrence with Chief Justice of High Court नोटिफाई कर सकती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अ कोर्ट ऑफ सेशन टू बी अ स्पेशल कोर्ट, यानी कि स्पीडी ट्रायल कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ, विद द कंकरेंस, विद द एसेंट एंड द कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट,
किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट में कन्वर्ट कर सकती है ताकि इस एक्ट में हुआ कोई भी ऑफेंस जल्द से जल्द विद द स्पीडी ट्रायल हो सके। सो स्पेशल कोर्ट का प्रावधान सेक्शन 84 में है, जो कहता है कि किसी भी कोर्ट ऑफ सेशन को हम स्पेशल कोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल, फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल। नाउ द इंपॉर्टेंट पनिशमेंट्स, last but not the least, important punishments. Important punishments. If you contravene any rule or regulation, if you contravene any rule or regulation, अगर आप इस एक्ट में बनाए गए किसी भी रूल या प्रावधान के अगेंस्ट जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, इट विल बी 10,000 rupees. 10,000 rupees. And on the second contravention, it may be the 50,000 rupees extending to 5 lakh rupees. Extending to 5 lakh rupees. If any person fraudulently avails any benefit, fraudulently avails any benefit, झूठ से false particular देकर अगर कोई बेनिफिट ऑब्टेन करता है, that a person who is with benchmark disability झूठ बोलता है, 40% या 60% बता दिया, या सर्टिफिकेट झूठा ले लिया, या सर्टिफिकेट फॉल्स है, in that scenario it is up to 2 years, up to 2 years, or fine which may extend to 1 lakh rupees, which may extend to 1 lakh rupees. Then section 95. Section 95 says, if you remember section 95 of IPC, law takes no account of trivial acts. छोटे छोटे बातों के लिए लॉ ध्यान नहीं देता, लेकिन यहां का सेक्शन 95 क्या कह रहा है कि अगर इस एक्ट के साथ साथ किसी और एक्ट में इसी ऑफेंस की पनिशमेंट है, देन विचएवर पनिशमेंट इज ग्रेटर इन डिग्री, whichever punishment is greater in degree, जो भी पनिशमेंट ग्रेटर इन डिग्री होगी वही हमें स्वीकार होगी। यहां पे हम कम पे नहीं जाएंगे, यहां पर हम ज्यादा पर जाएंगे। whichever is greater in degree will be adopted by us, will be adopted by us. और अंत में, सबसे अंत में, बस आपको यह पता होना चाहिए कि सेक्शन 100 प्लस 101, 100 एंड 101, सेक्शन 100 सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि वो कोई भी रूल्स बना सकती हैं, और 101 स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर देती है कि वो एप्रोप्रिएट रूल्स इस एक्ट के लिए बना सकती है। देखिए, जहां सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है वहां हमने नहीं लिखा, अननेसेसरली माइंड को हमने प्रेशर नहीं देना, क्योंकि जो पनिशमेंट का सेक्शन है वहां पनिशमेंट पूछी जाएगी, सेक्शन नहीं। जहां सेक्शन था वहां हमने सेक्शन को याद करने की कोशिश की। यहां 66 में एडवाइजरी बोर्ड है, सारे मिनिस्टर्स ही हैं जो एक्स ऑफिशियो हैं। रजिस्ट्रेशन की बात 52 में है, उससे पहले ड्यूटीज थी 41 एंड 48 जो कि हमें रिवाइज करनी है। राइट्स आर क्लियर, ड्यूटीज आर गिवन इन 41 एंड 48,
मैंने कहा अगर सोशल सिक्योरिटी को आप इंश्योर कर रहे हो 24 में, तो 48 में उसे ऑडिट करो. देन नेक्स्ट द रजिस्ट्रेशन 50 and 52, and then last but not the least the advisory boards given in section 60 and 66, जिसमें कि हर मिनिस्टर ही आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, जिसमें से कि अदर नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जो कि 5 + 10 + 3 के रेशियो में नॉमिनेट किए जाएंगे. I hope the act is clear to all, and I hope the important provisions and the relevant provisions which we have studied in this lecture will be helpful for your exam. Thank you very much.